मेरी आवाज आ रही है? Can you hear me? Yes, Hello? sir. तो किसी को मैंने कहा था वो अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए वो जरा देख लेना। अब एक तरह से हम इसका एक कन्वर्स करेंगे जो हमने प्रीवियस थ्योरम किया था। मैं अभी आता हूँ इस पे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। कहाँ है इसका ऑप्शन? यस। तो हमने अभी तक किया कि अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव है थ्रू आउट किसी जगह तो एक छोटा सा इंटरवल अराउंड दैट पॉइंट जहाँ पे फंक्शन जीरो है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जीरो नहीं है मेरे के अंदर, तो उसके अराउंड उस फंक्शन की साइन चेंज नहीं होती, सेम रहती है। पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव ही रहेगी। इट सीम्स रादर ऑब्वियस। ओके, अब मान लो ऐसा हम कर सकते हैं, बाय द सेम लॉजिक हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर सपोज ये एंड पॉइंट्स होते हैं ना जहां पे ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं चाहूंगा तुम एक होम असाइनमेंट कर लो कि इसी का जो हमने किया था। सपोज एफ इज, ये यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही यूज करनी है। क्लोज्ड ऑन इंटरवल से एफ ऑफ ए बी, इफ f of a is not equal to 0, होता ना इंटीरियर पॉइंट, then there exists a delta positive such that f of x has the same sign। ये बिल्कुल इसी को फॉलो करना है, सेम साइन, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, सिर्फ यूज करना है कंटिन्यूटी एट द एंड पॉइंट जो सेम साइन as f of a for all x belonging to b minus delta, right, to the left of b। and similarly मैंने क्या दिया, f of a दिया था यहाँ पे मैंने, f of b यहाँ अगर a है तो यहाँ आना चाहिए a plus delta to the right of a। and if f of b is not equal to 0, then f of x has the same sign। ये तो मतलब दो लाइंस का प्रूफ, has the same sign for all x belonging to should be up to the right of b। मैंने गलत तो नहीं लिखा है, हाँ ठीक है, b minus delta b, अब ठीक है, राइट। यहाँ लेफ्ट से हमने मतलब कुछ नहीं किया, बजाय पूरा इंटरवल लेने के लिए हमने एक साइड से इंटरवल लिया जहां से फंक्शन डिफाइंड है। बी के लेफ्ट से हमने छोटा इंटरवल लिया और ए के राइट से, एंटीरियर पॉइंट दोनों साइड्स। ये उससे भी इजी है जो हमने अभी किया। ओके, लेकिन आइडिया सेम है, डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी एट द एंड पॉइंट्स जो मैंने किया था। तो दिस इज योर होम असाइनमेंट। सो लेट्स डू नाउ द थ्योरम जो एक तरह से इसका कन्वर्स है कि अगर if a function f is continuous on a closed interval ab and f and a and f of b are opposite signs,
एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यू है, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव है, ऑपोजिट साइंस, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज नेगेटिव, तभी तो जब ऑपोजिट साइंस होंगे तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव, राइट? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी या अल्फा, जो भी हमारा, चलो सी या चलो अल्फा लिखते हैं, अल्फा बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी such that f of alpha is equal to 0. ये भी rather obvious है. Suppose एक continuous function का ग्राफ और ये continuous है between this region. अब मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे नेगेटिव है, तो ये फंक्शन कैसी होनी चाहिए? मतलब इट हैज टू पास दिस थिंग, किसी ना किसी वैल्यू पे इसको एक्स एक्सिस को क्रॉस करना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है. तो यानी बीच में कोई वैल्यू होगा जहाँ पे ये जीरो होगी, या फिर ऐसे हो सकती है एक से ज्यादा वैल्यूज पे ये जीरो हो. कंटिन्यूटी होने के लिए कम से कम इसको एक बार तो ये एक्स एक्सिस क्रॉस करनी है. एक्स एक्सिस क्रॉस करने का मतलब एफ ऑफ एक्स इज जीरो एट दैट, तो वही हमारा अल्फा है जहाँ पर एक क्रॉस कर रही. सो मतलब लगता तो ऑब्वियस है, लेकिन वी हैव टू प्रूव इट in terms of our definitions, function जो भी हमने किया अभी तक theorems. Now suppose that हम कह रहे हैं opposite signs हैं. To be more definite, suppose that f of a is positive and f of b is negative. तो मान लो एक का साइन पॉजिटिव है, मान लो f of a का पॉजिटिव है, तो दूसरे का फिर नेगेटिव होगा, ठीक है? एंड लेट, अब ये थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन उतना नहीं है. इट इज जस्ट द यूज ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्री. So let S be the set of all points, be the set of all those points in the domain, all those points in this AP for which fx is positive, for which f of x is positive. अब मैंने सारे points इस इंटरवल में लिए, क्योंकि एक पॉइंट में तो पॉजिटिव है ही, तो हमें पता ही है, तो हम सभी को जमा करेंगे जहाँ पे पॉजिटिव है, उस सेट का नाम ले रखा मैंने S. S is all x belonging to AP with the condition that f of x is positive. So this is my set. It's a subset of real numbers, right? So now we know f of a is positive. So therefore a belongs to the set S, right? ये इस condition को satisfy करता है. It belongs to this interval and which is positive. The function is positive at this point. So therefore मैं कह सकता हूँ S cannot be equal to 5. Furthermore, S is a subset of AB. It's by definition हम AB के ही points ले रहे हैं, तो इसका एक subset है. So which means that now this set is bounded. Every subset of a bounded set is bounded. So therefore S is a bounded set. And that is S is bounded का मतलब it is bounded above as well as bounded below. So S is a non-empty set of real numbers, non-empty subset of real numbers, that is bounded above. Therefore, by order completeness, S has a supreme. से उसका नाम पूछ देते हैं alpha. So it has a supreme alpha. So where of course this alpha जो है, it must belong to this interval, right? Because it is it's a supremum. It lies within. It's a supremum of a subset of this, and this is a closed interval. So closed interval contains supremum and infimum of all its subsets. So therefore alpha must lie here. We show that f of alpha is equal to 0.
we show that f of alpha is equal to 0, that's done, and alpha is not equal to a and alpha is not equal to b. इसका मतलब अगर हमने ये दिखा दिया कि f alpha is 0, then it is an interior point of this, right? Such that f alpha is 0 and we are done. Okay. First we show that alpha cannot be equal to a, right? Now since f of a is positive, therefore by previous theorem, it's the endpoint जो मैंने actually corollary दी, therefore by previous theorem या जो corollary थी जो मैंने home assignment के लिए दी, there exists a delta positive such that f of x is positive for all x belonging to a plus delta. Right of a में ये positive ही रहेगा, which implies that alpha cannot be equal to a. Why? क्योंकि alpha जो है alpha अगर a हुआ तो क्या हुआ, then you would have alpha is less than a plus alpha, right? और इनके लिए f of x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब a प्लस सॉरी मैं लिख रहा हूँ, तो अगर अल्फा a के बराबर हुआ तो अगर अल्फा a के बराबर हुआ तो क्या होगा, then you would have a number x such that f of x is positive and x is greater than alpha, जो नहीं हो सकता क्योंकि हमने इनके सुप्रीमम का लिया था अल्फा, उससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता. So and so therefore alpha cannot be equal to a. Now similarly f of p is negative, so there exists some delta positive such that f of x is negative for all x belonging to p minus delta p. To the left of p negative ही रहेगा. So which implies that p minus alpha is an upper bound of s, है ना, क्योंकि इससे आगे फंक्शन जो है वो नेगेटिव है, तो b of alpha, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव है तो वो b माइनस डेल्टा से, यानी यहाँ मेरे कहने का मतलब है if f of x is positive then x must be less than equal to b minus delta, क्योंकि इससे आगे b तक जो है बाकी बचा कुछ है वहां पे फंक्शन नेगेटिव है. So which means that b minus this delta is an upper bound of s. Yeah, so now if b is equal to alpha, then p minus alpha is an upper bound of s smaller than supremum, मैंने गलत लिखा हूँ, p minus delta, अगर smaller than, now then अगर b alpha के बराबर है, b minus delta is the same as alpha minus delta, which is less than the supremum because less than alpha, because b minus delta is the upper bound of s smaller than supremum alpha, a contradiction. So अभी तक हमें पता चला कि alpha is not equal to a, alpha cannot be equal to p by previous theorem को use करके. Now we have to show that f3 f of alpha is 0, so therefore alpha जो है it must belong to the open interval ab, the interior point. So next we show that f of alpha is equal to 0. Now assume to the contrary, हम थोड़ा सा और करेंगे, f of alpha is मान लो ये पॉजिटिव है, 0 नहीं है.
then because it is continuous, so there exists delta positive, वही जो sign preservation हम करेंगे, such that f of x would be positive for all x belonging to what do I have, alpha minus delta alpha plus delta, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो अराउंड एक इंटरवल पॉजिटिव होगा, इंटीरियर पॉइंट के लिए हमने ये किया ही था पिछले थ्योरम में, which means that this interval alpha minus delta alpha plus delta must be contained inside S because S is the total set, complete जो है सेट जिसमें सारे ऐसे वैल्यूज हैं जहां पे x पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल पे पॉजिटिव है तो S पे पॉजिटिव होगा. So therefore I can say alpha plus delta belongs to S, but alpha plus delta is bigger than alpha, the supremum of S. Supremum of S a contradiction, क्योंकि सुप्रीमम अपर बाउंड है, अपर बाउंड से बड़ा तो मतलब मैं क्या लिखा, ठीक है, oh sorry, I should take alpha minus delta, okay, belongs to S, right, and ठीक है, नहीं ठीक ही है, मैंने ठीक ही लिखा था, alpha plus delta is clearly bigger than delta, right, and alpha plus delta is contained in S, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था, बेटर ऐसे है, which means that I have got an element of S which is bigger than its upper bound, a contradiction because alpha is the supremum of S. इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो इससे छोटे ही होंगे, इससे बड़े कैसे हो सकते हैं, वो मैं क्या लिखा, यहाँ लिखना चाहिए था belongs to, यहाँ से ठीक है, supremum of S. एक्चुअली मेरी जल्दी है, कहीं पे लाइट इसका ये खत्म ना हो जाए, and so therefore f of alpha जो है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता. Now suppose f of alpha is negative, तो भी हम एक contradiction मानेंगे. So by continuity of f there exists a delta positive such that f of x is negative for all x belonging to alpha minus delta alpha plus delta. अब यहाँ पर भी एक contradiction obvious है. Now since alpha is the supremum of S, therefore alpha minus delta cannot be an upper bound, cannot be an supremum upper bound, क्योंकि इससे of S implies there exists an x belonging to S such that अगर सुप्रीमम नहीं है तो मैं इससे एक बड़ा एलिमेंट ढूंढ सकता हूँ such that x is bigger than alpha minus delta and f of x is positive, right? So what? So I have found, and of course x जो है अगर x s में है, so this must be less than or equal to delta, क्योंकि इसका सुप्रीमम है s में. So which is a contradiction? Which is a contradiction to, let me call this condition star. So we are done. So therefore f of x जो है, sorry, f of alpha जो है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, and therefore f of alpha must be equal to 0. तो थोड़ा सा अगर इंट्यूटिवली लिखें बड़ा इजी है कि अगर यहाँ पे किसी जगह पॉजिटिव है नेगेटिव है तो बीच में कहीं पे 0 होना चाहिए अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, लेकिन हमें काफी लंबा चौड़ा इसको करना पड़ा कि f of alpha must be 0 at some interior point.
तो इसको ठीक से करना है, ये सुप्रीमम इन्फिमम ही इसमें बेसिकली यूज होता है। सो आई थिंक शुड आई डू इट नेक्स्ट थ्योरम, जो हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, या कल करें? चलो ये करते हैं, फिर खत्म करते हैं। वैसे खत्म नहीं, चलो खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। हाँ, CR2 अटेंडेंस का देख लें।